Hello everyone, welcome to the PYQ class for the Introductory Macroeconomics course. What are we going to do today? We are going to discuss a few problems related to ISLM. So ISLM related कुछ numericals जो है that we will try to solve in this particular lecture. So let's proceed with that. So let's say we can start off with this particular problem wherein proper details regarding each of the function is given and आपसे फिर अलग-अलग तरीके के questions पूछे गए हैं. IS equation बताओ, LM equation बताओ, find the income, rate of interest and all of these things. Okay, so let's try to do this question first. So only at the end, let me just solve them. So this particular question was, this was 2021 question, right? 2021. So let me just also write that there. This was a 2021 question. Okay. So what all is given to us? Let's try to see that and let's proceed accordingly. So consider an economy with the following specification. एक economy दी हुई है जिसके कुछ specifications दिए हुए हैं आपको. First thing is consumption function, then investment, then government spending, then taxes, then demand for money, then supply for money, price level, and then you have to write equation for the IS and LM and solve for the equilibrium level of income and rate of interest. And then finally, it's written that compute the value of fiscal and monetary policy multiplier. So जब आप अपनी fiscal policy में changes करते हो, majorly जो government spending अगर आप increase करते हो, so when that happens, what is the amount by which your income changes? That is your fiscal policy multiplier, and monetary policy multiplier is when your real money supply is changing, then what happens, right? Or you can say just the M, when that is changing, then what happens? Okay, so you have to figure that out. So sabse pehle, it's always a good practice to write everything that is given to you, so that you kind of have a grasp of kya kya diya hua hai. ठीक है, there are a limited number of things given, so you just have to modify them here and there and then do it. So पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जो जो चीजें हमें दी हुई हैं वो सब हम लिख लेते हैं. So consumption function C is equals to 100 plus 0.75 YD. Now what is this YD? This YD is basically your disposable income. ठीक है, ऐसी income जो आप spend कर सकते हो. Not all the income that you have can be spent, right? You might be earning something, उसका कुछ portion as taxes you give. There might be some portion of money that is coming through government subsidies to you, so that is also in your hand to spend. So वो सारे components जब adjust कर लेते हो तब आपके पास disposable income बचती है. So this is disposable income. Okay, and this is your C. Your investment is basically 200 minus 50 I. I is your interest. So higher is the rate of interest, the lesser is the amount of investment, because higher interest means less people would have the ability to borrow money to do more investment, right? And then government spending is given, it is 300. The taxes out of your total income, basically they are 0.20Y. That means 20% tax है कि आपकी income का 20% हिस्सा as taxes चला जाता है. And then, so this is one side of the story, and then rest of it is given demand for money, supply of money, and price level. So demand for money, MD, is equals to 0.10Y minus 12.5I. So demand for money is positively related with income and negatively related with interest. कि अगर income ज़्यादा है, output ज़्यादा है economy, so there is a higher demand. And if the interest rate is
higher, the money demand is lower. So this is your money demand, and your money supply is 200. And one more thing is given, which is price level. Price level P is equals to 2. So one side of the story, this is your money market. And this particular thing is your goods market. So जब भी आप अपने गुड्स मार्केट के अंदर एक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हो, यू गेट एन IS इक्वेशन. और जब भी आप अपने मनी मार्केट के अंदर एक्विलिब्रियम की बात करते हो, यू गेट एन LM इक्वेशन. So all of this is given to us, and basically IS LM equilibrium का meaning होता है कि you have to basically find वो सारे, so you have to basically find that level of income and interest pair such that both goods market and money market, they are both in equilibrium. जब दोनों चीजें equilibrium में हो, that is something that you have to figure out. Okay, so ये हमसे पूछा गया है कि ISLM equation निकालनी है पहले तो, equilibrium here and then equilibrium here, and then you have to find the equilibrium level of income and rate of interest. That means find the level of Y and I such that both this and this, they are in equilibrium. ठीक है, this is what you have to figure out. Yes, Ananya, that is what is happening. Good evening. Okay, so these are all the details which are given: consumption, investment, government spending, taxes, demand for money, supply of money, prices. So जो भी हमें दिया हुआ था, we have all listed that, and IS equation निकालो, LM equation निकालो, and equilibrium level निकालो. That is one thing. And then fiscal policy and all of that, let's come back to it in a bit. ठीक है, कि थोड़ी देर में इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है. ओके, ऑलराइट. तो सबसे पहले तो IS इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो देखो हमें क्या चाहिए. वी नो एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, राइट. सो हमारी जो डिमांड है, गुड्स मार्केट equilibrium would be when, you know, our aggregate demand YD is basically consumption plus investment plus G plus there is no outside sector, so we'll not be adding the net exports and all of these things. So only three things majorly combine and form the goods market demand side. ठीक है, और इसको जब आप अपने आउटपुट के बराबर पुट कर दोगे, that is when you have the equilibrium. ठीक है, so this is your demand and this becomes your supply. ठीक है, so आप इन दोनों को equate कर देते हो, so that will give you the IS equation. Okay, so what is given to us here, C is 100 plus, so basically what is my YD here, 100 plus 0.75 YD. This is disposable income, so this will be Y minus जो भी आपके taxes हैं. ठीक है, हमारे taxes कितने हैं, 0.20 Y. So I'll just subtract my taxes here. Sorry, 0.20 था, 0.20 Y. So I did that. So this is my consumption, and then I will just add my investment. So आपने अपना investment add किया. Your investment was it is actually 200, not 2000. 200 minus 50I. This is your investment, and your government spending is also given. So how is Y minus 20Y? Because that is YD. YD is disposable income. So disposable income you get when you remove the taxes and add the transfer payments to that.
So disposable income is y minus taxes plus transfer payments. There were no transfer payments. You only had the taxes. So उसको हमने incorporate किया है यहाँ पे. So that is one. Okay. So that is the investment side. And then there's a government spending side. So for now, let me just write it as G. So what is YD, Ananya? What is YD? क्या होता है YD? Disposable income क्या होती है? What is disposable income? What is disposable income? आपकी एक्चुअल इनकम माइनस आपके टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स जो आपको मिली हैं, राइट? सो माय टैक्सेस वर गिवन टू मी that they were this, so I will subtract them from my actual income, which is y, right? And that is exactly what we've done. Okay, so that is what happens here. And after that, what do we do? So we had a government spending component also, so let's just write G for now. Okay, so my aggregate demand is 100 plus this is 0.75 and this is multiplied by 0.80y plus 200 minus 50i plus G. Okay, this is what it is. And then this becomes 100 plus this is 3 by 4 times this is 4 by 5 times y plus 200 minus 50i plus G. Let's just write the value of G also here, or maybe not. Let's just keep it G. तो यहाँ पे ये value क्या हो गई? You have 100 here and 200 here. It becomes 300. ठीक है, 100, 200, 300. And then you have this. So 4 and 4 get cancelled. You have 3 by 5, meaning 0.60y. Okay. And then this is minus 50i plus G. This is your aggregate demand. And this should be equal to the aggregate supply to get the equilibrium, right? So this demand should be equal to the aggregate supply, which is y, right? So yd equals to y. Implies you do this 300 plus 0.60y minus 50i plus G equals to y, right? G value in this case is given as 300. So let's just do that. So if I write 300 here, so 300 plus 300 becomes 600 plus 0.60y minus 50i equals to y. That is what we have here. And when you just see this, you can bring it this side and you are going to get 0.40y. And yahan pe you will have 600 minus 50i. Okay. So, okay. अब हमें निकालना था IS equation, ठीक है? So you can just leave it here also that okay, this is IS equation. But usually जब आप IS curve बनाते हो तो IS curve में जब आप draw करते हो, so you have I, y pairs, ठीक है? So you can also write things in terms of I equals to something, right? So I, y इस तरीके से I is plotted on the y-axis and income is plotted on the x-axis. You can plot it like that, okay? Or you can just keep it कि y की value क्या है, ठीक है? So if we try to do that, we'll have this.
So this is basically 0.4. So this is basically 2 by 5, right? 2 by 5y 600 minus 50i. So इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? We'll multiply it by 5 divided by 2. So y equals to 5 by 2, 600 minus 50i. So this give us y equals to, this is 1500 minus, this is basically 250, 125 I. This is what we get. Okay. So this particular equation that we get can be called as our IS equation. This can be my IS equation. इसको मैं अपनी IS इक्वेशन बोल सकती हूँ. ठीक है. सो मैंने क्या किया? गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को सॉल्व किया. ठीक है. So just checking if there are no mistakes that I've made. 100, 0.75, 250, 300. Okay. Fine. So this is, yes, 0.6, 200, 300, 600. Looks okay to me. Okay, fine. All right. So this is my IS equation here. And then next step is, so one portion is done, which is IS equation. LM equation simply आपको क्या करना है? आपको मनी डिमांड और अपना रियल मनी डिमांड और अपना रियल मनी सप्लाई जो है उसको इक्वेट करना है. गुड्स मनी मार्केट एक्विलिब्रियम यू हैव टू फिगर आउट, राइट? सो मनी मार्केट एक्विलिब्रियम, money market equilibrium so money market equilibrium we will talk about, right? So money market equilibrium में क्या होता है? आपका money demand should be equal to your money supply. ठीक है. So that is first thing. और यहाँ पे आपको money supply जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिस इज बेसिकली योर रियल मनी डिमांड. ठीक है. और यहाँ पे P अलग से दे दिया. सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड M by P. आपकी रियल मनी सप्लाई M by P आपको अलग अलग से कैलकुलेट करनी है. ठीक है. सो कैलकुलेट तो क्या ही करनी है? M दिया हुआ है, P दिया हुआ है. यू जस्ट हैव टू डिवाइड देम इंडिविजुअली एंड फिगर आउट द LM इक्वेशन. ओके. सो यहाँ पे यू हैव MD which is 0.10y. So basically let me just bring this entire thing here. Yes. So यहाँ पे my money demand is this. Money demand equals to money supply. So if I do that, money demand is 0.10y minus 12.5i equals to money supply. Money supply here is 200 and money supply MS by P I have to do, right? So if I do that, P here is 2. So this side is my money demand, this side is my money supply, and then I just have to equate them. So this is 0.10y minus 12.5i equals to 100. So if you want, what you can do is maybe just keep y on one side and rest of the other things on the other side. So you can do that also. 0.10y equals to 100 plus 12.5i. So this is 1 by 10. So y will become 1000 plus 125i. Right? This is basically the relationship. Here y and I are positively related. If I is going up, y will go up. If y is going up, I'll go up. So they have a positive relationship. Unlike this case wherein they have a negative relationship, and which is basically what we see. यही हमें देखने को मिलता है, right? So this particular equation is your LM equation. Actually LM equation would have been done here only. जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में हम लिखते हैं ना, ky minus hi equals to ky minus hi equals to M by P. It would have been done here only, but we are just simplifying it. ठीक है. So LM equation we've done.
IS equation we've done, and now we have to solve for the equilibrium rate of interest and income. तो अब आपको क्या करना है? These two equations that you have to find the equilibrium, right? So you'll have to find the equilibrium level of income and interest rate. So what you do, आपकी IS equation क्या है? 1500 minus 125 I equals to Y. So this is my IS equation, and my LM equation is this, right? So simply what I can do here is I can just add these two equation. अगर आप इसको add करोगे तो क्या मिलता है? 2y equals to 1600, and then this is 125 negative, this is 125 positive, so they get cancelled. So हमारे पास यहाँ पे y की value क्या आ जाती है? 800. So I'll just write it as y star. Y star meaning the equilibrium level of income. So y becomes 800. That is one thing. And then the second thing is, the moment you have y, you can just figure out the value of I also. So अगर आप LM equation में लिखते हो, so this is 800 equals to 100 plus 125 I. So this becomes 700 equals to 125 I, right? So now what happens? So this is, 7 times 100 equals to 125 I. 125 is 5. If we do the table of 25, and here it is 4. Okay, so I is basically 28 divided by 5. If you do this, you get 615, and this is 10. So this is basically 5.6, right? So yes, 6.1, yes. So your interest rate becomes, I star becomes 5.6. Okay, so your equilibrium level of income, Y star, and interest rate is basically 800, 5.6. So ये आपका equilibrium level of income and interest rate आ गया है, ठीक है? This is what was asked in the first part. तो क्या करना है? It's not very complicated as such, but हाँ, काफी सारे steps हैं. Goods market equilibrium gives you IS equation, money market equilibrium gives you LM equation. इन दोनों का equilibrium आप निकालते हो, उससे आपको equilibrium level of income and interest rate मिलता है, जहाँ पे goods market and money market both are in equilibrium, ठीक है? So that solves the first part of the problem, which is this. And then the next part is calculate or compute the value of fiscal and monetary policy multipliers. So let's do that now. All right, so the next part is finding the fiscal and monetary policy multipliers. तो fiscal and monetary policy multipliers का पहले तो मतलब समझने से पहले let's just take a bit of a time to see fiscal policy और monetary policy multipliers की बात कहाँ से शुरू होती है. So see, in general, अगर आप अपनी IS equation को देखोगे तो वो क्या होती है? Your y value is alpha g multiplier a bar. ए बार के अंदर क्या क्या होता है? जी, आपका कंजम्पशन का जो भी फिक्स्ड कंपोनेंट है, या एनीथिंग व्हिच इज फिक्स्ड, दैट कम्स इन ए बार minus b times I. So this is that component of investment which is affected by interest rate. So this is your y according to the IS equation, and LM equation is basically, so this equation, ky minus hi equals to m by p. So if you just bring it this side and this side and then divide by h, you're gonna get this equation. ठीक है? तो आपके पास IS equation हो गया है, LM equation हो गया है, ठीक है? और जब भी आप equilibrium की बात करते हो तो आपको क्या करना है? इन दोनों equation को satisfy करने वाले y और I pairs निकालने हैं, ठीक है? So जब आप equilibrium के बारे में सोचोगे, so what are we gonna get? So we can do one thing, कि ये जो I value है, you can put it here and then see what is the value of y that comes up. ठीक है? So y is alpha g a bar minus b times I. I पे मैंने ये वैल्यू रख दी,
ठीक है, this is the value that I put here. So what do I get? Y is alpha g. So मैंने सिर्फ ये वाली जो I वैल्यू थी वो यहाँ पे रिप्लेस करी है, ठीक है, that is the only thing that I have done here. So okay, so now simplifying it, we can do this. Alpha g a bar minus alpha g b by h, and then there is a ky, and then here was minus minus, so we get a plus plus alpha g b h m bar by p. ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें y कंपोनेंट है और ये पूरा हमारे पास एक कांस्टेंट है. सो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, सो वी कैन ब्रिंग इट दिस साइड एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस. ठीक है, एंड दिस इज अल्फा जी ए बार प्लस अल्फा जी बी बाय एच m bar by p. This is what we have. ठीक है, so what do you do next? आप y अपना कॉमन ले लो, ठीक है, so y आपने कॉमन लिया, so you get this, right? So अगर आप LCM लेते हो h, so you get h plus alpha g bk by h, right? And this is alpha g a bar plus alpha g b by h m bar by p. This is what we have here. अब जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई, सो बेसिकली यू कैन डिवाइड बाय दिस थिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट? इफ यू डू दैट यू गेट y इक्वल्स टू, और जब आप इससे डिवाइड करोगे सो दिस h विल गो ऑन टॉप एंड ये जो न्यूमरेटर है ये नीचे रह जाएगा, सो दिस विल बी हियर एंड दिस h विल गो ऑन टॉप. So you ultimately get this h alpha g divided by h plus alpha g bk, and then here is a bar plus here ये h ऊपर जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, so इधर alpha g b बचेगा और नीचे ये वाली चीज बचेगी. So you will have alpha g b divided by h plus alpha g bk, and this is m bar by p. ठीक है, this is the only thing which is needed for us to understand what is monetary policy multiplier and what is fiscal policy multiplier. ठीक है, तो बेसिकली ये जो इक्वेशन अगर हमें ये समझ में आ गई तो फिर हमारा आगे का काम हो गया है. ठीक है, इसके बाद देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट figuring out what is h, what is b, what is alpha g and all these things, and then just putting it into the formula. ठीक है, ओके जी. अब जैसे अगर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, कोई भी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू चेंज कर रहे हो तो उससे आपका जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या होता है कि अगर फिस्कल पॉलिसी का बहुत बड़ा कंपोनेंट क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग. सो आप इन अ सेंस क्या जानना चाहते हो कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होती है तो उससे हमारी जो इनकम है वो कितना चेंज होती है. सो बेसिकली यू वांट टू फिगर आउट डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा g. ठीक है, g इसका ही कंपोनेंट है, अगर g 10 यूनिट से बढ़ता है तो a बार भी 10 यूनिट से बढ़ता है, वो एक टर्म है जो एडेड है. ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको डेल्टा y बाय डेल्टा g पता करना है सो दैट विल बी नथिंग बट h अल्फा g ओवर h प्लस अल्फा g b टाइम्स k. दिस इज योर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर. दिस इज योर फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर. ठीक है, और ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ए बार जो है उसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स हैं, सी बार प्लस सम इन्वेस्टमेंट का फिक्स्ड कंपोनेंट प्लस जी का कोई फिक्स्ड कंपोनेंट. तो जी अगर चेंज होगा, जितना जी चेंज होगा उतना ही ए बार चेंज होगा, राइट? बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड. सो व्हाटएवर इज द चेंज इन वाई, दैट इज एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट टाइम्स चेंज इन G, that will tell you what is the change in Y. So this is your fiscal policy multiplier. And similar तरीके से आपका monetary policy multiplier क्या होता है कि अगर आप अपनी मनी सप्लाई में चेंज करते हो, सो बेसिकली रियल मनी सप्लाई में जितना भी चेंज हो रहा है उसके वजह से आपकी इनकम में कितना चेंज हो रहा है. सो वट एवर इज अ चेंज इन दिस, हाउ मच इज दैट चेंजिंग, चेंजेस रिफ्लेक्ट इन चेंज इन इनकम. सो बेसिकली
आई एम सो सॉरी. So whatever is this change in y divided by whatever is this change in m bar by p. तो आपका जो भी रियल मनी सप्लाई में चेंज हुआ है उसके वजह से जो इनकम चेंज हुई है उन दोनों का रेशियो है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर है. सो ये चेंज होते टाइम इसको कुछ नहीं होता है. सो देयर इज नो चेंज हियर. सो दैट इज सिंपली दिस पर्टिकुलर thing, alpha GB divided by H plus alpha GBK. So this is your monetary policy multiplier. This is your monetary policy multiplier. ठीक है, ये आपका monetary policy multiplier है. Now your task is very simple. Just figure out what is H. So अब यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है तो एक ही बार डिनोमिनेटर निकाल लो एंड देन जस्ट यू नीड. सो बेसिकली यू नीड व्हाट इज H, व्हाट इज K, व्हाट इज B एंड व्हाट इज अल्फा G B H K. आई थिंक दैट इज ऑल राइट. सो H क्या होता है, K क्या होता है, B क्या होता है. सो B इज बेसिकली जो आपके इन्वेस्टमेंट फंक्शन में कांस्टेंट होता है वो B होता है. सो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो B की वैल्यू क्या है, B इज एक्चुअली दिस इज योर B. ठीक है. व्हाट इज योर K एंड H, K इज जो भी आपका K इज बेसिकली जो भी आपका वैल्यू यहाँ पे है, दिस इज K and this is H, right? K coefficient in front of Y, H coefficient in front of I. So KH and B. So B is 50, K is 1.10, B is 50, K is 0.10 and H is 12.5, I guess. 12.5, yes. So these three values are there and alpha G क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया था. सो दिस वॉज y एंड दिस वॉज बेसिकली c एंड दिस इज 1 माइनस t टाइम्स y. इस तरीके से हो गया. तो हमारा अल्फा जी इस केस में क्या था, इस केस में आपका अल्फा जी होगा 1/1 माइनस c टाइम्स 1 माइनस t. राइट. सो इट शुड बेसिकली बी दिस नंबर जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था विच वॉज दिस 0.40. सो इफ इट कम्स आउट टू बी दिस ना 1/0.40 अगर ये आ गया तो दैट मीन्स द फॉर्मूला इज करेक्ट. राइट. सो दिस इज 1/1 माइनस सी यूजुअली होता है अगर आपका टैक्स रेट 0 हो. इफ यू हैव सम टैक्स रेट दिस इज 1 माइनस टी लाइक दिस. ओके. सो यहाँ पे what is this value 1 minus c का वैल्यू कितना है 0.75, t का वैल्यू 0.20 था हमारे पास. so 1 minus t will be 0.80. ठीक है. and then you just multiply these two, you're going to get this 1 minus 0.6. so this is 1/0.4. yes, exactly. so this is fine, right? which is, so 0.4 is basically 10/4 which is 5/2 which is basically 2.5. Okay, this is your multiplier. So we have all the values that we need in order to find these values. So let us just put these values here and we are done. तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे values put करनी है and आपका काम खत्म हो गया. ठीक है. तो just see what the values are. So H is 12.5, K is 0.10, B is 50, alpha G is 2.5. So these values if I put, I get H is 12.5 times alpha G 2.5 divided by ये जो denominator है एक ही बार निकालना है. तो 12.5 plus alpha G 2.5 times B 50 times K 0.10. ठीक है. So ये value अगर आप देखोगे, so you are going to get, let me just see what this value is going to be. So this is 12.5 times 2.5. This is 31.25.
and then I just divide it by, then I'll just divide it by, first of all, 2.5 times 0.1 times 50. We are going to get, yes, so we are going to get 12.5 plus 12.5, which is 25. सो आपका डिनोमिनेटर 25 आएगा, ठीक है. सो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 31.25 डिवाइडेड बाय 25, you are going to get 1.25. So this is your fiscal policy multiplier, and your monetary policy multiplier is this. So आपका डिनोमिनेटर तो दोनों जगह सेम है, so we'll just use this 25 value. And ऊपर जो value है alpha g, which is 2.5, and then b, which is 50. Okay. So this is, yes. So this is basically 25 times 5, which is 125, divided by 25, which is 5. So आपका monetary policy multiplier is 5. So मतलब अगर रियल मनी सप्लाई में चेंज होता है बाय 1 यूनिट, सो आपकी जो इनकम है उसमें चेंज होगा 5 टाइम्स. सो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इज अ ह्यूज मल्टीपल. एंड आपका जी में अगर 1 यूनिट चेंज होता है तो आपकी इनकम में 1.25 यूनिट्स इंक्रीज होगा आपके इनकम में, ठीक है. सो दिस वाज योर मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर एंड फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर. You know, some people don't like to remember it. I usually had a habit of, deriving this while in the exam, but it might not be feasible for some of you. So it's a good idea to just know how this process works, कि किस तरीके से आप इस इक्वेशन से मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर और फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर निकाल सकते हो. इफ यू कैन, आई मीन आइडियल यू शुड try to remember it, because otherwise you will not have to take so much of time to solve this. Okay, so all right, let me know if I might have done some calculation errors in between. Just post it in the comments, what mistakes I have done. And yeah, I hope you were able to do this problem, and if anything like this comes in future, you'll be able to tackle it. So yeah, okay, thank you so much. Take care.